This video we are with question number 5. So what is question number 5? Name the property under multiplication used in each of the following. हमें यहाँ पे बताना है कि if we are multiplying these two numbers, okay, if these two numbers are multiplying, then by which property they are multiplying, okay. So we have to name that property. So first of all, minus 4 by 5 into 1 is equals to 1 into minus 4 by 5 is equals to minus 4 by 5. Once again I am repeating, minus 4 upon 5 into 1 equal to 1 into minus 4 upon 5 equal to minus 4 upon 5. So we know that, मैंने आपको ये बताया है कि if 1 is added to, suppose I am taking 5 a number, if 1 is multiplied with any number, then we get the same number, okay. Suppose that 5 is multiplied with 1, अगर 5 1 से multiply हो रहा है, then we get 5 again, okay. This means what, here also यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, if minus 4 by 5 is multiplied by 1 or 1 is multiplied by minus 4 upon 5, so you will get what, same number, same rational number minus 4 by 5. This means what, therefore कौन सी यहाँ पे property use हुई है, therefore यहाँ पे क्या property use हुई है, multiplication by मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके. यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बिकॉज 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, ओके. इन प्रीवियस क्लासेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट दिस 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज नोन एज व्हाट, एडिटिव आइडेंटिटी, ओके. सो सिंस 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हेंस यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज रहेगी, कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे हम यहाँ पे. सो योर आंसर विल बी what, multiplication by multiplicative identity, okay. तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, multiplication by multiplicative identity. Is that clear? So now we move on to our next question. Minus 13 upon 17 into minus 2 upon 7 is equal to minus 2 upon 7 into minus 13 upon 17. All these concepts we have done in our previous classes. अगर आपको वो concept clear है तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा तो इसको क्या लिखा जाता है. Now see, we know that if a and b are any two rational numbers, then a into b can be written as what, b into a. This property is what? This property is commutative property of multiplication. So यहाँ पे यही property use हुई है. See, minus 13 upon 17 into minus 2 upon 7 is written as what, minus 2 upon 7 into minus 13 upon 17. So we have changed the order of the digits. हमने order of the digits को change कर दिया है. Then also our answer will be what, same. So which property we are using? So what should be your answer? Commutative property of multiplication. So what property we will write? Commutative property of multiplication. Is that clear? So this is your answer. Now final part 3. Finally we are moving on to part 3. Now see, minus 19 upon 29 into 29 upon minus 19 is equal to 1. This means what, ये भी आपको पता होना चाहिए ये क्या है. See, आपको ये मैं आपको बता चुका हूँ, if p upon q is any rational number, then q upon p will be its what, multiplicative inverse, okay. So यहाँ पे भी वही चीज़ है, देखो minus 19 upon 29. So what will be the multiplicative inverse of minus 19 upon 29? 29 upon minus 19, है ना. ये देखो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे बना है एंड द डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, है ना. सो this means what, and if multiplicative inverse is multiplied to that number, then you will get what, 1, means multiplicative identity. ये मैं आपको बता चुका हूँ, okay. So what is the property here, क्या property यहाँ पे use कर रहे हैं, multiplication by multiplicative inverse, multiplication by multiplicative inverse. Is that clear? So which is this property? Multiplication by multiplicative inverse. So
आई होप आपको ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई होगी. सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल see the solution of question number 6. Thank you.